औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज सब के साथ मैं हूँ आप लोगों की होस्ट डॉक्टर तसव्वुर और इस प्लेटफॉर्म के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खैरियत से रखे। व्यूअर्स, आप लोगों को बताते चलूँ कि हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉलेज हब पाकिस्तान का एक डिजिटल लर्निंग हब है और इसका मकसद ये है कि अवाम नास में तालीम और तरबियत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करना, मुस्बत सोच का परवान चढ़ाना और तफरीह फराहम करना है। इस मकसद के लिए हम लोग तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक्किद करते हैं लाइव सेशंस के फॉर्म में, और उनमें जो हम गेस्ट इनवाइट करते हैं अपने शोबा के माहिरीन होते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि अवाम नास की बेहतरी के लिए काम किया जाए और उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, जो उनको अवेयरनेस दी जाए, वो एक ऑथेंटिक वे में दी जाए। और इसलिए हम लोग यहाँ पर जो अपने साथ गेस्ट इनवाइट करते हैं वो प्रोफेशनल अपने शोबे में माहिरीन होते हैं। और हमारा मकसद बेसिकली यही है कि जितना पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज गया हुआ है पॉलिटिकल लिहाज से, या फिर हम अगर वैसे बात करें तो मुसलमानों को जो है वो बाहर, जैसे आप लोग सुनते हैं अक्सर मूवीज में भी अब तो दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है कि मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है इन लाइव सेशन के थ्रू जो है वो बाहर जा सके। इसीलिए हमने जो है ये आज भी एक बड़ा ही अच्छा और डिफरेंट टॉपिक जो है वो चूज किया है आज के लिए। आज का टॉपिक बता दूं, हम आज बात करेंगे पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ भी करवा दूं। हमारी आज की गेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। इनका नाम है इकरा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। कैसी हैं आप? Walaikum assalam. Thank you so much for having me. I'm doing good. Hope you're well too. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मैं आपसे अब जो है परमिशन लेना चाहूंगी कि हम सेशन को आगे अगर स्टार्ट करें, बिल्कुल क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टॉपिक को मतलब एक डिफरेंट भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस पे हम कभी गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। इस पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात करें कि हम लाशऊरी में, हम बेध्यानी में बहुत से ऐसे काम है जो कर बैठते हैं। कुछ तो बहुत फायदेमंद हो जाते हैं, कुछ में हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब वो क्या है, होते हैं, हम क्यों करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज अपनी गेस्ट से। और जो है मैं आप लोगों से दोबारा कहती चलूं, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके बताइए ताकि आपकी भी क्यूरी साथ साथ क्लियर हो जाए। अब मेरा आपसे पहला सवाल इकरा ये है कि हम क्योंकि बात करें पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड की, तो हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताइए कि बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड है क्या? Okay. So let's start with the very basic. So basic start करने से पहले सबसे पहले हम उसकी फाउंडेशन को देख लेते हैं. Let's go back to year 1915. So there was an Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis. We who belong to this field know he is famous, and the father of psychology we call Sigmund Freud, and he's the founder of psychoanalysis. So he gave the concept of mind through analogy of an iceberg. एक एग्जाम्पल उन्होंने दी, एक एनालॉजी दी आइसबर्ग की. आइसबर्ग की एनालॉजी क्या थी? जैसे आप एक आइसबर्ग को देखते हैं, सो इस 1/7 पोर्शन जो होता है उसका बल्क जो होता है आइस का, वो वाटर के ऊपर होता है. ठीक है, इट्स ओनली 1 portion that out of those 7 portions that we see above the water. So according to him, the visible part of the Yes, please continue. Okay. So according to him, the visible part is our conscious mind, and the remaining portion, that is 95% portion जो है वो हमारा unconscious mind है. He also put pre-conscious and subconscious in it. So according to him, so there are 3 levels of mind. So what he proposed and divided the mind into 3 levels. Okay. Those 3 levels are, the first is conscious mind, the second level is pre-conscious, and the third level is unconscious. So the conscious mind consists of all the thoughts and perceptions. The pre-conscious mind, जिसको हम subconscious mind भी कहते हैं, is actually exist
below consciousness. So conscious mind के नीचे होता है, according to Sigmund Freud, and it contains thoughts and feelings that are that a person is not currently aware of, but can easily brought those thoughts and feelings into the consciousness. So it is, you can say, जैसे waiting rooms होते हैं. So pre-conscious या subconscious is like waiting rooms. It stores the fears and doubts, memories, or it stored all the rest of the knowledge in it. Then there is a third level, and it's called unconscious mind, according to Sigmund Freud. So according to him, unconscious mind में हमारे सारे selfish motives, aggression, socially unacceptable desires होती हैं. So these are the three levels which he proposed and divided the mind into three levels, which was conscious mind, pre-conscious mind, and the unconscious mind. Now, I want to make things simple here. So to make it really simple, we divide the mind into conscious mind and unconscious mind. ठीक है, आप इसको इस तरह से understand करें. So there are two major levels, right? So जब आप एक iceberg को देखते हैं, so जो visible part होता है, जो आपको पानी के ऊपर नजर आ रहा है, that is conscious mind, and the remaining portion, जो 95% है, वो unconscious mind है. ठीक है, so a conscious mind की जो characteristic है, वो है कि it is that 5% of your mental activity. It consists of all the mental processes of which you are aware, जिसके बारे में आप aware हैं अभी. For example, you may be feeling like you were feeling like thirsty and decide to get drink water. That is your conscious mind is at work. So unconscious mind, on the other hand, is the anything that is not conscious and unconscious. That's how simple it is. So it is the primary source of human behavior. It is the primary source of human behavior, and it is far more powerful because it processes huge quantities of information in milliseconds and control all the processes of our survival, just breathing and doing all the heartbeat rate, body functions, ताकि हम हमारे survival and we function properly. So this is actually an unconscious mind. I hope I explained in a very simple way. Yes, correct. वेरी वेल डिफाइन इकरा. और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा दोबारा बताते चलूँ कि अगर जैसे आपने बताया कि हमारे माइंड को हम वैसे 3 पार्ट्स के अलावा, मतलब 3 पार्ट्स आपने बता दी, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड एंड देन अनकॉन्शियस माइंड. लेकिन जैसे आपने एंड पे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे व्यूअर्स को बताया कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड हम मेजर 2 टाइप्स में जो है इसको डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे तो हमने ये बात कर ली, लेकिन अब मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि हम अगर बात करते हैं, हमने डिफरेंट सेशंस किए हैं और हम डिफरेंट जो है वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, और वो मोस्टली क्या है कि कोई मेडिकल कोई इश्यूज चल रहे हैं, डिजीज चल रही है, उनके बारे में है, या फिर अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्या है कि हम बात करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, लेकिन कभी भी अनकॉन्शियस माइंड पे हमने इस तरह से कोई सेशन देखे नहीं है. तो मुझे बताएं कि व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक, हम इस पे आज बात क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी कि हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करें? Okay, this is a really good question. Significance क्या है इस टॉपिक में? Why we are really discussing it? मतलब अगर आप learn कर रहे हैं unconscious mind को, तो इससे क्या फायदा होगा? Where you are going to apply this knowledge in your daily life, right? So firstly, understand that brain is the biggest muscle in the body. The brain is the biggest muscle in the body, and it controls all our daily functioning. Now, if the brain is dead, then there won't be any function. The first thing is the unconscious mind is the reservoir of feelings, thoughts, urges, and memories that are outside of our conscious awareness. जो हमारे conscious awareness में नहीं चीज, there is a lot that is not there, but it's still in our brain. And today's science estimate that it is 95% of your life, the unconscious mind. How? So this portion affects the decisions we make, the unconscious mind. It affects the decisions we make, the actions we take, and all our emotions. Emotions में कौन से आ जाएंगे, जैसे anger, sadness, fear, guilt, betrayal, hurt, ये सारे emotions. And the behaviors, they are depending on these 95%
portion of the mind, that is unconscious mind, and that lies beyond our conscious awareness. हमारी conscious awareness नहीं है. So it is very important that you first understand what is unconscious mind and what are the rules. आप एक गेम खेलते हैं, उसके रूल्स हैं, ठीक है. इफ यू डोंट नो द रूल्स यू विल लूज, राइट. बट इफ यू नो द रूल्स, आपको एक गेम के रूल्स पता चल जाएं. सिमिलरली आपको अनकॉन्शियस माइंड के जो रूल्स हैं जिन पे वो काम करता है, आपको वो पता चल जाएं. सो यू कैन यूज दैट to your advantage. So this is the significance of the topic, and I would like that everybody understand about this very basic, first understand कि unconscious mind क्या है और ये किन असूलों पे काम करता है, इसके rules क्या हैं. So we can accordingly design अपने behavior, कोई भी behavior हम अपने achieve करना चाह रहे हैं, नया behavior install करना चाहते हैं खुद में, कोई undesired behavior को leave करना चाहते हैं. So once we understand unconscious mind, this will help a lot in achieving goals also. थैंक यू सो मच. एंड इकरा, यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको वेलकम करते चलूँ और बताते चलूँ कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, और इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली है हमारी गेस्ट हैं वो इकरा शाहिद के साथ. बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, टॉपिक है, हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं. इसलिए क्योंकि हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, सो आई वुड लाइक टू आस्क हाउ पावरफुल इज द अनकॉन्शियस माइंड. Okay, so how powerful is the unconscious mind? So there are so many characteristics of unconscious mind. बहुत सारे rules हैं इसके. I would like to explain only 5 right now, and once you understand these 5, these are really the major ones, and they're going to help you. So the first thing, the first power of the unconscious mind is that it is always awake. It never sleeps. It always works like 24/7 hours, and it handles everything your body needs to function properly, from eating and breathing to digesting and making memories. So it is covering everything. आपके eating से लेकर आपका breathing किस तरह से है वो, your digestive system, all the systems in your body, and also not just that कि bodily functions को handle कर रहा है आपके survival के लिए, बल्कि आपके memories, emotions, all the desires, dreams, each and everything. So now imagine कि एक unconscious mind जो है वो it is always awake and it is handling everything. It is organizing everything. It is even organizing your memories according to timeline बनाकर. That's the first thing, information about unconscious mind. The second thing is that it's habit based. It's habit based on daily routine. For example, जैसे आप सुबह उठते हैं, you wake up, you get dressed for the office, you go travel, you drive a car and you go to office. और बहुत सारे आप अगर फोकस करें कि हम कॉन्शियसली काम नहीं कर रहे होते, लाइक वी आर ऑन ऑटो पायलट. हम जल्दी जल्दी हैबिट बन गई है, वी ब्रश आवर टीथ, वी हैव ब्रेकफास्ट, और हम जल्दी जल्दी कॉन्शियसली हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वी एट द सेम टाइम यूजिंग मोबाइल, हम अपना मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम बात भी कर रहे होते हैं, हमारे साथ जो फ्रेंड बैठा है हम साथ में नाश्ता भी कर रहे होते हैं. सो इट इज़ कि हैबिट बेस्ड है. एंड the one thing that you have to understand is that it needs repetition. Unconscious mind needs repetition until the habit is installed. कोई भी हैबिट इंस्टॉल करने के लिए आपको रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है. द साइंस बिहाइंड इसके अनकॉन्शियस माइंड का ये रूल है कि आपको रिपीट करना है, एक एक्ट को बार बार रिपीट करना है ताकि वो ऑटो पायलट से तभी जो है वो अनकॉन्शियस में चली जाए, एंड दैट बिकम्स हैबिट, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट. तो हमारी हैबिट्स क्या होती हैं, हमें उन पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें कोई फोकस नहीं करना पड़ता या पुश नहीं करना पड़ता खुद को वो काम करने के लिए. सो बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट. ये हमेशा आपको एक शॉर्टकट जरूर निकाल के दे देता है. सो दैट वाज द सेकंड थिंग. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनकॉन्शियस माइंड और पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड इज कि इट टेक्स एवरीथिंग literally. I love this one.
because isko jo kaho, it's like, okay, roger that. Let me explain it more. So it means that it doesn't differentiate between positive and negative. It is very subjective, and it doesn't think or reason independently कि अच्छा ऐसे है. Logically वो analytically आपकी बात को नहीं process करेगा. It doesn't think. It just take it as it is, literally. जो आप कहें, जो आप suggest करें. It simply obeys the commands it receives from your conscious mind. Because it enjoys serving you. And it needs clear orders to follow. So जैसे आपने अलादीन का चिराग देखे होंगे कार्टून, उसमें जीनी होता है, ठीक है, तो उसको कहता है जो हुक्म मेरे आता है, राइट. सो अनकॉन्शियस माइंड को आप बिल्कुल वैसे ही लें. सो इट इज लाइक अ जीनी. आप जो कहेंगे खुद को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद को ये कहती हूँ कि आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, सो गेस व्हाट विल हैपन. Your unconscious mind would say, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हुक्म मेरे आता, and you are right, you are absolutely right, and here are the evidences of why you cannot drive a car. So it is very funny, but it is true. It's going to give you evidences. अच्छा, so Ikra is saying that she cannot drive a car. Okay, why she cannot drive a car? Okay, ये evidence है, ऐसा हुआ था. Evidence number 1, evidence number 2, evidence number 3. Hence, prove she cannot drive a car. So be very clean about your language when we're speaking. Be very clean in your language. अपने linguistics में बहुत clean हो, because whatever you say intentionally or unintentionally, आप जो भी कह रहे होते हैं वो directly indirectly suggestion होती है आपके unconscious mind के लिए. According to हेनरी फोर्ड, जो कि एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस मैग्नेट भी उनको इस तरह से भी पहचाना जाता है, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी. ही सेड कि इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर राइट. बिकॉज अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यस यू आर राइट, बिकॉज योर अनकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू टेक इट लिटरली एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. Yes, you can. But if you say कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो your unconscious mind is going to do the same thing according to its rule. Take that portion, that suggestion literally, and give you the evidences. हाँ, आप इस वजह से ये काम नहीं कर सकते. So it takes everything literally. So it means that it doesn't differentiate between positive and negative. आप जो भी कहेंगे, it will make it a belief. And it is very subjective, and it needs clear orders to follow. So आगे भी I will explain that clear orders are very important. जितना ज़्यादा आप अपने काम को, कोई भी चीज़ अचीव आपने करनी है, उसको clearly लिखें, आपको हर एक चीज़ स्पेसिफाई हुई हो, उतना आसान होता है आपको अचीव करना. क्यों? Because that's how your unconscious works. It needs clear orders. So that is the third thing. Another thing that I want to explain about the unconscious mind is how it's really powerful. That the unconscious mind is like a computer processor. So computers were originally designed around brain models, and at one time computers were also called electronic brains. So it means that unconscious mind can process huge quantities of information that come by your 5 senses and translate them back to your brain in the blink of an eye. Yeah. So it stores everything in a storage. So unconscious mind has a huge storage space. बहुत ज़्यादा storage space होती है. Like from your birth till now, it actually stored everything. जितने भी events हुए हैं, आप जितने भी लोगों से मिले हैं, even for once, that information is also, stored in your unconscious mind. So everything is stored in your unconscious mind, and it has huge memory, and it processes information really, really fast. So that is the fourth point. And the fifth characteristic of the unconscious mind is that it is primal. So primal का मतलब क्या होता है? Primal means that
relating to, you know, early stages of evolutionary development. अब इसका क्या मतलब है? What does it mean? So our unconscious mind actually communicates in images, in feelings, in metaphors, in symbols. So it is very symbolic in nature. So it focuses on the emotions rather than logic or reasoning. So people say कि जैसे आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरी छठी हिस्स ने कहा था, मुझे फील हो गया था, या people say that my sixth sense told me certain thing is going to happen. Look, it already happened. So the truth is that it's intuition. So what's intuition? Intuition actually acts like a bridge between conscious and unconscious mind. आपके ये unconscious mind का way होता है communicate करने का with your consciousness. So it do brings certain things to your conscious level through your intuition. So people also say, okay, I had this gut feeling that certain event going to happen. So it is that intuition actually, that intuition. So it is that process of the brain that requires no analytical reasoning. So आपका जो unconscious mind होता है, it is very primal. So it process the information and it get messages. आप अपने consciously भी जो आप books पढ़ते हैं, stories पढ़ते हैं, it do affect you. It pass that message to your unconscious mind. This is how it process. So metaphors, symbols, images, these all works for your unconscious mind. So this is how unconscious mind is really powerful. Once you understand how the unconscious mind follow the rules and how it's work actually. I mean, unconscious mind is working 24/7 hours. The second thing was that it's a habit based. The third was that it takes everything literally. So I have to be really careful what I speak. The fourth was that it has all the information and it processes information really fast. And the fifth was that it processes information and it also communicates to the conscious mind in terms of images, feelings, metaphors, symbols. So yeah, this is how powerful the unconscious mind is. There is a lot, definitely. The more you research about unconscious mind, the more you study unconscious mind, you will be amazed that it's like a whole universe. ऐसा है कि जैसे पूरी यूनिवर्स है, your unconscious mind is like a universe. वाओ, अनकॉन्शियस माइंड इज रियली वेरी पावरफुल। और जो है एज यू सेड दैट हम सिंपल हैबिट्स जो है जो रिपीटेडली हम लोग कर रहे हैं वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही बेसिकली हो रही हैं, हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। इससे पहले तो मैंने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया इस चीज को। और जैसे आपने कहा, तभी मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप कोई भी चीज अगर आपसे नहीं हो रही और आप उसको रिपीटेडली कहते रहो, बजाय ये कहने की कि मुझसे ये चीज मैं कर लूंगी या हो जाएगी, ये कहने के बजाय अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो मुझसे होनी भी नहीं है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप में फील हो जाएगा और फिर आप ये नहीं कर सकेंगे काम कभी भी। तो आज मुझे पता चला कि ये क्यों, कहाँ से हमें ये ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एक जिनी मौजूद है अनकॉन्शियस माइंड की सूरत में, जो हमारे अंदर वो बात फीड कर लेता है और फिर वैसा ही वो जो इम्पैक्ट है वो आता है। तो मैंने आपसे अब अगला सवाल ये है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल और हम हर चीज को तकरीबन रिलेट करते हैं सक्सेस के साथ। तो आज जो अनकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं, मैं इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से हम अनकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपने गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। Okay, that's great. So my answer would be starting from a question. So my question is, okay, it's going to be end of March 2023. So my question is from the audience that how many of you have already given up on your New Year resolution 2023? जो New Year resolution हम बनाते हैं हर साल के शुरू में, तो अभी तक कितनों ने अचीव कर लिया? अभी तक कितने जो ऑडियंस में लोग हैं वो कंसिस्टेंटली उसी प्लान पे हैं? एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन अप ऑलरेडी? So that's my question. So I would assume that we actually give up on our New Year resolution. That most of us have already given up, and the March is going to end soon. So actually, what happened is that we use unconscious mind to effectively change our behavior and our results. Let me explain this with an experiment that was conducted in by the Princeton University, United States of America.
So what they did was کہ انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس سلیکٹ کیے جو ہائی تھے اپنی مورل ویلیوز میں اینڈ دے ور ریئلی کمپیشنیٹ. So they specifically selected those students for the experimental purpose. And ان کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ آپ نے ایک سرمن کنڈکٹ کرنا ہے in their next class. So they were supposed to give a sermon in their next class on a topic. So experimenters نے experiment کے لیے he intentionally they make the students late. They make them late. So اب ٹائم کم تھا and they had to rush to their class to deliver sermon. So they had to hurry up and they were running and they have to be on time. So along the way, there was a person on the side of road, and he was really in distress. He was really in stress. So, but the highly moral or compassionate individuals to select together for the experiment didn't help that person. Though it was there in their value that to have compassion and to have moral values, but they didn't help that person who was in distress, and they just rushed into the class. اور آئرونیکلی جو ٹاپک تھا اسٹوڈنٹس کو دیا گیا تھا ٹو ڈیلیور فار دا سرمن واز فرام دا بائبل اینڈ دا ٹاپک واز دا گڈ سمیریٹن پیرابل. سمیریٹن کے بارے میں بتا دیتی ہوں. اٹ از کہتے ہیں چیریٹیبل پرسن کو, ہیلپ فل پرسن کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو سرمن ڈیلیور کرنا تھا وہ اسی چیز پہ تھا جو پریکٹیکلی وہ کر سکتے تھے. دے کوڈ ہیو ہیلپ دوز دیٹ پرسن who was in distress. اچھا, اب یہ ایکسپیریمنٹ میں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. The same thing can happen to you, the same thing can happen to me. Despite our intentions and our values, we may have some other goals that conflicts with our new year resolutions. So ہمارے کچھ اکثر ایسے بھی goals ہوتے ہیں that actually then there is a clash. And if our new year resolution is something really which deep down we don't really want to change, we just include that in our new year resolution because school لگے گا, لوگ تعریفیں کریں گے, یا چلو یہ تو اسٹینڈرڈ ہے, یہ تو کرنا ہی ہے, کر لیتے ہیں یہ کام, نیو ایئر ریزولوشن میں ایڈ کر لیتے ہیں, اچھا ہو جائے گا, ہیبٹ بن جائے گی. But if it's not something you really want to do, you're not going to do it. So our conscious mind is very adept at coming up with the convenient excuses and rationalizations. It's going to say, hey, I'll start that new diet tomorrow. And that tomorrow never comes actually. So here's the thing. جہاں پہ یہ کوشچن ہے کہ ہم اپنے unconscious mind کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں goals achieve کرنے کے لیے. So this is how you are going to understand. So ask yourself if you are truly committed to change, if you truly want to achieve what you have added in your goal list. So only if the answer is yes, so only then you can overcome all those powerful winds that drive you off from the course. So the first step is always be aware and sincere to yourself. What do you want, and do you want it really? So be very sincere about it. So whatever you are going to write it down, whatever goal it is. So ask yourself first the very basic question, do you really want to do it? So that's the first thing. Because your unconscious mind knows you and it really knows you very well. It really knows you what you want to be. So if it's not aligned, and deep down you don't want to do it, then there would be again excuses. Conscious mind would be there to give you excuses. Chalo kal kar lenge ye kaam. So that's the first thing. Then the second thing is environment. Check on your environment. Another surprisingly powerful influence on what we do comes from our environmental cues. So that actually triggers behavior unconsciously without our realizing it. For example, the behavior of others is quite contagious, and we can catch it through our daily contact with them. So be very aware of کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ کی کمپنی کیا ہے, آپ کے انوائرمنٹ میں کون سے لوگ ہیں, are they aligned with your goals and interests, and even your social media.
So if our Facebook and Instagram या जितने भी social media handles हैं connects us to depressed people, connects us to lonely people, then even if we don't know them personally, right? We just are connected to them on Instagram. We are just following them. So we ourselves are more likely to be those things. We are going to be the next person who is going to be depressed and who is going to feel lonely. So this is how ads work. Ads जो चलते हैं, जैसे आप कोई भी YouTube की वीडियो ऑन करने से पहले एक ऐड आ जाता है. लेट्स सपोज कोई फूड पांडा के ऐड चल रहे हैं या कोई फूड रिलेटेड एड्स चल रहे हैं. So you will ultimately see that you would have those cravings कि अच्छा we tend to eat more and order more food the more we see ads of food. एंड इसी तरह से एड्स को डिज़ाइन भी किया जाता है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अनकॉन्शियस रूल. अनकॉन्शियस माइंड के रूल पे भी है ये द थिंग्स दैट यू सी रिपीटेडली बिकॉज आपका अनकॉन्शियस माइंड, रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कि इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इट कम्युनिकेट्स थ्रू, it's very symbolic in nature and it sees symbols, images, stories and everything. So that's how ads work also. So I told you about these two major factors that you have to keep check on to achieve your goals. So now you are not on effect side. अब आपको ये दो factors पता चल गए. The first is that what you really want to do. The first thing is. The second would be your environment. So rather than on the effect side of the equation, you would be at the cause side of the equation, taking the full responsibility of your action. So you can use these unconscious forces to your own advantage, for your own advantage. तो जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, that one very specific technique. There are many techniques definitely, and you can design your own. And I would say you can use this one. So this is a very good technique, an effective technique. So after years of decades of laboratory research as well as practical demonstrations के बाद जो real life settings में practical demonstrations भी की गई इस technique की, and they revealed very powerful results. So and the name of the technique is implementation intentions. How do they work? So implementation intention is when X happens, I will do Y. For example, when this happens, I will do this. So you make a clear, a concrete plan that includes where, when, and how. So you will carry out the intention. Where, when, and how you will carry out the intention. So you tie your desired future behavior to a highly likely event or situation. Okay, then when the future event actually happens, then you will be more often than not find yourself starting to do the very thing you wanted to do, even if you have forgotten you wanted to do it. Now I make it more simple. For example, if you want to block the carryover effects of a bad day at work, बहुत ज़्यादा ऑफिस स्ट्रेस रहा है and you feel like कि आप जो है रोजाना ऑफिस का जो स्ट्रेस होता है, when you go home you are still in stress and फिर वहाँ पे family related fights start हो जाती हैं and there is no peace ना ऑफिस में और ना घर में. So you design an intention कि now there is a lot of office stress, work related stress, and I really don't want to affect my marital life. I really don't want to affect my relationships. So what should I do? How to create an intention? So first, you are going to set an intention. आप एक intention जो है वो set करेंगे. But always ask, do you really want to do it? So you are going to ask, and then if the answer is yes, I really want to resolve this challenge. So to let go of the negative stresses of work when you get home and show my family that that you are happy to be with them, right? Because your family keeps on waiting for you also, and they really want to see you happy. So you set this intention, and then ये एक इंटेंशन आपने सेट कर ली कि मैंने जो नेगेटिव स्ट्रेसेस हैं वर्क के उनको वहीं पे लीव करना है, एंड देयर शुड बी अ गैप सो दैट माय होम जो प्राइवेट लाइफ है, माय पर्सनल लाइफ डोंट गेट डिस्टर्ब.
So then the implementation plan. So implementation intention की टेक्निक में मैंने आपको बताई, so वो इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं. So you are going to apply this implementation plan. You are going to tie it to a reliable future event. ठीक है, किस तरह से? So the moment when you get out of your car after driving home from work, and you are standing in your driveway, that's when and where. जब हमने बात की थी ना when, where and how की implementation plan में, so this part is going to be when and where. The moment when you get out of your car after driving home from work and you're standing in the driveway, you remind yourself to take a deep breath, forget all about office and be happy with your family. That is how. So what you actually did is you actually created a pause for yourself. You are going to remind yourself every time you get out of your car and you are standing in the driveway and you take a deep breath and you tell yourself, now I'm home and I'm happy with my family. So you actually attached this, you actually implemented this intention. So be very specific of के when, where and how. अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम नई चीजें क्रिएट कर लेते हैं. The best way is to attach new thing with the previous old thing. So definitely a person drives car daily from work to home and from home to work. Now the addition of the new thing is to take a pause, take a deep breath, and remind yourself that now you have this space, you have this pause, and you're going to leave the stress of office there, and now you're with your family. So you do this for a week, and it started to become a new habit. Remember, जो हमने unconscious rule of habit definitely हमने इसको किया है, understand किया है, that how your unconscious work. Now that was the first example. The second would be कि what if we want to start exercising but keep forgetting or making excuses कि अच्छा चलो कल करते हैं exercise. So you can apply this implementation intention there also. When you go into your how you're going to apply it, when you go into your bedroom to change, right, to dress up. So that's where जो हमने when, where और how implementation intention में किया है, that's where. So when you go into your bedroom to change your clothes, you will immediately put on your running shoes and clothes, and that is how. So what you're doing कि रोजाना एक जो routine में चीज है, that you go into your bedroom to change clothes, that's the routine thing. You are attaching it with a new thing, and that is your running shoes and clothes. So, and definitely once you do that, you would be looking pretty silly if you don't go for a run or do exercise, right? So that's the one thing. अच्छा, अभी हमने जो है वो desired behaviors को as a goal या कोई भी goal है उसको achieve करने के लिए हमने बात की है. There are also unwanted behaviors जो हम चाहते हैं कि we just have to, you know, I'm done with these unwanted behaviors. I really want to change these habits. So the other side of the same coin is for unwanted behaviors. Remember the environmental cues जो हमने बात की है environmental cues की कि be very aware of your environment. So यहाँ पे मैं एक और experiment explain करना चाहती हूँ. So एक experiment conduct किया गया था and उस experiment में 4-year-old kids को के साथ वो experiment किया गया था कि experimenter was there and he put 1 marshmallow in one plate and 2 marshmallows in the second plate, and there was a 4-year-old child. So उनसे ये कहा था कि if you wait for the experimenter to go outside and come back, you will have 2 marshmallows. But if you don't wait and ring the bell, you will have 1 marshmallow, and the experimenter will come. So there is this whole interesting experiment. It's also available on definitely YouTube and other documentaries, and you start reading and researching. So the purpose of this experiment was to check how much self-control is there
in the kids, and also which aspect of a human being wins, self-control or willpower, what's going to win. So the results of the study was that people who have more self-control are more healthier, they make more money, they make more friends, they are more successful in their life, and the rest of the people than the rest of the people, and are not those with the strongest willpower. Now, I explain it in a very simple way. They are those people जिनके बारे में ये कहा था, they're those kids and the people who set up their perception about the environment. So there are two things. Either you can change the environment or you can change your perception about the environment. So there are those children who set up their personal world to remove the cues to unwanted behavior. So they prevented the temptation to eat marshmallow from happening in the first place. So they change their perception of the environment. So, uh, so how you can apply this information in your daily life? So I would say कि बहुत सारे होते हैं, there are many people who want to lose weight, and there are many people who want to take care of their health. They want to avoid eating a lot of sweet stuff. Or so the first thing you can do is that don't buy sweet desserts or ice cream at the first place. So it won't be there at your home to tempt you to have the cravings. So environmental cues के बारे में check रखना बहुत ज़रूरी होता है. If there are cues in your environment, then definitely your self-control should be greater than your these temptations. So okay, so this trick can also work at societal level also in achieving goals. Societal level पे भी आप achieve कर सकते हैं इस trick को use करके, unconscious mind को study करके. So there was a self-control researcher. Her name was Wendy Wood, and she pointed out that there is a great reduction if in any society there would be a great reduction in smoking over time, not through people willpower, rather by eliminating the tobacco ads from the TV. So इससे ये हमने क्या किया, टोबैको एड्स को टीवी चैनल से कैसे रिमूव करें, एंड दिस इज रिमूविंग द इन्वायरमेंटल क्यूज. So why we are removing the environmental cues? Because we are understanding actually unconscious mind. It works on symbols. It works on metaphors. It is processing the images. So this is how you can also remove the unwanted behaviors by understanding unconscious mind. So these are the new scientific evidences that actually give us hope. If we want to increase good habits, if we want to get rid of unwanted habits, and we can tie them to the regular place and time and give ourselves reminder to prime our unconscious mind to support these habits. So that's the first thing, and the second is to remove environmental cues. So in this way, we can use the power of our unconscious mind for good and have much better chance of keeping those New Year's resolution जो हम बनाते हैं 2023 है 2024 है, or any goal during the year. There is no specific time to set a goal. Definitely, you can set goal anytime, but it would be definitely much more fruitful once you understand about your own mind, your unconscious mind. That is 95%. Thank you so much, Ikra, for sharing the great tips and examples, also for clearing my queries so well. And here I would like to end my session. Do you have any message for the audience? Yeah, okay. So the message for the audience would be the good news. And the good news is that your mind will believe whatever you tell it. So make sure that you are speaking your desires to your mind, because it's going to believe whatever you are going to tell it. Make sure that you are speaking your desires. Make sure you are speaking about your dreams, because it is listening to you like a baby 24/7, and whatever you say is going to follow. Be very clean in your linguistics, and be more focused on your dreams, your desires, and not your fears.
You get to choose how your mind serves you. Get to choose your thoughts in the direction of what you want. Decide what you're gonna be, who you're gonna be, and how you're gonna do it. And also, I would say, have the courage. Have the courage to follow your intuition, and have the courage and trust your unconscious mind, because they somehow already know what you truly want to become. So I would end by this message. It's great. Thank you so much. Thank you so much once again for joining our platform. And thank you so much for your time and knowledge sharing. Thank you so much, Ikra. Wonderful. You're welcome. Thank you so much and you're welcome. यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करते चलूँ कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये तमाम से इन्फॉर्मेटिव बातें पहुंच सकें, जितनी ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करती है हमारी गेस्ट ने आज। जो उम्मीद है कि किसी को भी किसी किस्म की भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सबको जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और बड़ा मजा आ रहा था आपकी बातें सुनते हुए, और इतना मतलब हम इन चीजों को रियलाइज भी नहीं करते। और ये इतना ज्यादा, जैसे आपने पहले स्टार्ट में बताया था कि 95% जो है वो अनकॉन्शियस माइंड हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है, अगर हम पूरे ब्रेन की बात करें उसमें। और हम लोग देखें डेली बेसिस पे सारे काम अनकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली ही कर रहे होते हैं, उसी के थ्रू ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। तो ये आज का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, इम्पोर्टेंट भी था। मैं चाहूंगी कि आप ये सेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें, और जो है उनको पता चल सके कि अनकॉन्शियस माइंड कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या पावर है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से दोबारा किसी नए टॉपिक पे, किसी नए गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।